Hello students, today we are going to start our next chapter, that is metals and non-metals. Now see children, this metals and non-metals, they are a type of elements. Metals and non-metals, they are a type of elements. They are elements. Now what are elements? Elements are the substances which are made up of only one type of atom. They are made up of one type of atom. अब जैसे एक एलिमेंट की बात करते हैं, हम हाइड्रोजन ले लेते हैं. हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन एक एलिमेंट हो गया. ठीक है, तो इस तरह और आप ले लो, कार्बन एक एलिमेंट हो गया. ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट हो गए. अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो एलिमेंट है वो जो है हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है हाइड्रोजन. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है. कार्बन कार्बन के एटम से मिलके बना है. आयरन आयरन के एटम से मिलके बना है. तो एक एलिमेंट क्या होता है जो कि एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है. ठीक है, अब ये एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with which an element is made up of. The smallest unit with which an element is made up of. जैसे हाइड्रोजन का एक एलिमेंट हो गया तो ये जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो एटम से मिलके बना हुआ है, और ये सारे एटम किसके हैं? ये सारे एटम जो है एटम ऑफ हाइड्रोजन है. उसी तरह ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है. तो एलिमेंट्स को हम एक प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ दीज एलिमेंट्स, now see here, these elements are classified as metals. These elements are classified as metals and non-metals, right? Elements are classified as metals and non-metals based on differences in their properties. एलिमेंट्स में जो डिफरेंसेस थे, एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट ऑल्सो, एंड दे आर कॉल्ड एज द मेटेलॉइड्स. दे आर कॉल्ड एज द मेटेलॉइड्स. Metalloids are the elements which share the properties of both metals as well as non-metals. Okay. Now, till date, near about 114 elements are discovered till date. Out of these 114 elements, most of the elements, they are metals. Most of the elements are metals, right? 22 of them, they are non-metals. 22 of them are non-metals, and a very few of them are metalloids, and a very few of them are metalloids. Okay. Now, whether it is a metal or a non-metal or a metalloid, all these elements which are known till date, they have been placed in the table which we call it as a periodic table. You can see the periodic table here. In this periodic table, that is the modern periodic table, you can see all the elements known till date are placed in this periodic table. Okay. Now just see here. Just look at the right side of the periodic table. Here you can see the elements like carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, phosphorus, sulfur. The elements which is present on the right side of the periodic table, they are the non-metals. Then come to the left side of the periodic tables, right? The elements in the left side of the periodic table, they are the they are the metals. Okay, they are the metals. Now just you can see here the first element, just you can see here the first element of the periodic table, that is hydrogen. Okay, this hydrogen is a non-metal, but it is placed along with the metals. Okay, so this is an exception. ये लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स है, यहाँ देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ देखिए आयरन है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे जो मेटल्स हैं. तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन दैट इज प्लेस्ड अलोंग विद द metals in the left side of the periodic table, the first element hydrogen. So this is an exception, right?
Now you come here, just see here the shaded elements that you can see here. Okay, these are just like boron, silicon, arsenic, germanium. All these elements, they form a staircase type of structure. You can see here, they form a staircase type of structure, and these elements are called as the metalloids. These elements are called as the metalloids. So all these elements, whether metal, non-metal or the metalloids, they are placed in the periodic table, right? Okay. Now see children, in our syllabus, right, in this chapter, metals and non-metals, the portion that we are going to cover, in this chapter are, you can just note down this. The first topic, it is the physical and chemical properties of metals and non-metals. You can please take down this, metals and non-metals. Then the second topic that we have to cover in this chapter, that is the reactivity series. Okay. And the third topic that we have to cover, it is the formation and properties of ionic compounds. The formation and properties of ionic compound. See here, these three topics we have to cover in this chapter, metals and non-metals. Rest of the topic from this chapter is deleted according to the revised syllabus issued by the CBSE. So in this chapter, metals and non-metals, up to formation of ionic compound only we are going to study. Okay. Now let's start with physical properties of metals and non-metals. Okay, we'll first see the physical properties of metals and then the physical properties of non-metal. Physical properties of metals. Okay, physical properties of metals. Luster or shine. See here, we know that the metal have a metallic luster और they have a shiny appearance, है ना. metals में एक अपनी metallic चमक होती है, metallic luster होती है, एक shine होता है metals में. example हम ले लेते हैं, जैसे कि gold metal हो गया, silver जो है metal हो गया, तो इनकी अपनी एक metallic luster होती है, shine होती है, ठीक है. इसके अलावा और भी metals है, जैसे metals हो गया, magnesium है, copper है, zinc है, aluminium है. these are also metals. They also have a shiny appearance, but what happens when these metals, they are exposed to air, they form an oxide layer. An oxide layer is formed over the metals, and then due to which the metals becomes quite dull in appearance. Okay, but when we rub this metal, when we rub the surface of this metal with a sandpaper, then what happens, that dullness disappears and the metals, the shiny appearance, it resumes its shiny appearance. Okay, so the metals, most of the metals, they have a luster or a shine. Okay, the next property is the hardness. Second is the hardness. Okay, metals are generally hard. See, we will use the term generally here because when we will study the physical property, you will find that there are so many exceptions. Right? अच्छा, तो metals are generally hard. जैसे आप ले लो आयरन हो गया, कॉपर है, जिंक है, कितने हार्ड मेटल्स है ये, ठीक है. बस उसमें भी कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट है. ये सॉफ्ट मेटल्स में आ जाता है हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये हमारे सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं. और एक चीज़ है बच्चों, आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको जो है एलिमेंट्स के सिंबल को लर्न करना है. यू हैव टू बाय हार्ट दी सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है. जैसे सोडियम है तो उसका सिंबल होगा Na, पोटेशियम का सिंबल है K,
लिथियम द सिंबल इज Li। तो ये सिंबल्स आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो हार्डनेस में ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, एंड वी कैन कट दिस मेटल्स बाय यूजिंग द नाइफ। इजिली वी कैन कट इट। वही नाइफ जो हम अपने किचन में यूज़ कर रहे हैं उस नाइफ से इजीली हम इसे कट कर सकते हैं। तो दे आर क्वाइट सॉफ्ट, ओके। देन नेक्स्ट कम टू द स्टेट। The metals they generally exist in solid state। metals की state generally कौन सी होती है? metals they generally exist in solid state, right? but again there is an exception, that is mercury, symbol is Hg। mercury is a metal which exists in liquid state। मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी जो भी मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। दिस मर्क्यूरी इज ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मामीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आफ्टर स्टेट, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट इज मैलिएबिलिटी, राइट। नाउ मेटल्स आर malleable। now what does this malleable means? that means it can be beaten into sheets, that is it can be beaten into sheets। metals can be beaten into sheets मतलब metals को हम लोग पीट के जो है एकदम पतली लेयर जो है इसकी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं। फिर एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, हाँ, फिर एल्यूमिनियम है। these metals आर हाईली malleable, ठीक है। जो एल्यूमिनियम की हम लोग फॉइल यूज़ करते हैं ना, एल्यूमिनियम की फॉइल जो फूड रैप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स मैलिएबल नेचर। फिर गोल्ड और सिल्वर भी बहुत मैलिएबल होते हैं और इनकी इतनी थिन शीट्स ऑब्टेन की जा सकती है कि इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स, राइट, ओके। नाउ दिस गोल्ड फॉइल वॉज ऑल्सो यूज बाई रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या यूज़ किया था? गोल्ड फॉइल यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि उसको मेटल की एकदम थिन लेयर चाहिए थी जिसमें कि कम से कम एटम हो। तो उसने क्या यूज़ किया था? उसने गोल्ड। वाई गोल्ड वॉज यूज बाई रदरफोर्ड? बिकॉज ऑफ इट्स मैलिएबल नेचर, बिकॉज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम मेटल्स की, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं उसकी डक्टिलिटी। अब हमने देखा है ना, कॉपर की वायर होती है घर में, जब इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है तो पतली पतली कॉपर की वायर हमने देखी है ना, तो वो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर हम लेते हैं तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की हम लोग नियर अबाउट 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर जो है वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो आप सोच सकते हो कि गोल्ड जो है वो कितना डक्टाइल है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में, और वो प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज इट अलाउज द हीट टू पास थ्रू देम, ठीक है। अच्छा, इसे हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे ऐसे करके एक स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक स्टैंड बना देते हैं। ये हमने बनाया एक स्टैंड, इस स्टैंड में अब हम लेंगे, आप कॉपर की
एक वायर ले सकते हो, या आप एल्यूमिनियम की वायर भी ले सकते हैं हम लोग। फिर एक वायर को हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे। ये वायर हमने ले ली है, एक एल्यूमिनियम या कॉपर जिसकी भी आप चाहे एक वायर ले लो ठीक सी, ठीक है। ये इसका फ्री एंड हो गया। अब दिस विल बी क्लैम्प्ड विद दिस स्टैंड, इसको ये स्टैंड के साथ क्लैम्प करते हैं हम, ठीक है। इसको हम लोग ये स्टैंड के साथ क्लैम्प कर देते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फिक्स अ पिन यूजिंग वैक्स हेयर ऑन द फ्री एंड। ये फ्री एंड है ना, इसमें हम लोग वैक्स की सहायता से एक पिन को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, वैक्स की सहायता से। ये कॉपर या एल्यूमिनियम की आप किसी की भी वायर ले सकते हो। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल हीट द क्लैम्प्ड एंड। ये जो क्लैम्प्ड एंड है इसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। एक बर्नर की सहायता से हम जो है इस क्लैम्प एंड को हीट करेंगे, ठीक है। जब हम ये क्लैम्प यहाँ पर जब हम इसे हीट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम्स व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट दिस wax along with the pin, it will drop down. Why it drops down? Because see, we are not heating this place, we are heating this corner, but how this wax drops down? See here, because of the transfer of the heat, we are heating this portion. This metal is a good conductor of heat, so it conducts the heat, it allows the heat to pass through it, and the wax, the heat get transferred up to here, and then due to this hotness the wax will melt and it will drop down. But this metal, it will not melt. The metal, it will not melt. This shows that metals have high melting point. It shows that metals have high melting point. Okay. अच्छा, अब ये जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये भी हम देख सकते हैं। ये भी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम यहाँ पर। टेक अ बैटरी, ठीक है। यहाँ हम एक बैटरी ले लेते हैं। बैटरी में ये दो हमने अटैच किया यहाँ पे क्लिप्स, क्लिप ए, क्लिप बी हम बैटरी में अटैच कर लेते हैं, ठीक है। ये हम ले लेते हैं, आप कोई कॉपर की वायर ले लो। यहाँ पे हमने ये बल्ब ले लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्विच की अटैचमेंट कर दी है, इससे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से हमने ये जो है अपने सर्किट को कंप्लीट किया है। यहाँ बल्ब लगा हुआ है, स्विच ऑन है। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, द बल्ब विल glow, isn't it? The bulb will glow. Why? Because this metallic wire, it is a good conductor of electricity. It allows the electric current to flow through it, and the bulb it glows. Okay. Now, the extent of current flowing through this wire, the extent of current that flows through the metallic wire, it varies. Okay, it varies. Suppose you want to find out the extent of current flowing through this wire, मतलब इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमें वो पता करना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। We will replace the bulb by an instrument which is called as an ammeter, है ना। इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एममीटर, ये इलेक्ट्रिसिटी में आप एममीटर के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस द बल्ब बाय ए ammeter. Okay, now what is ammeter? Ammeter is an instrument which is used to detect the current, to find out the current flowing through this circuit. How much current is flowing through this circuit will be shown by this ammeter. ये ammeter के डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा कि कितना करंट जो है इस सर्किट में जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। और हमें करना क्या है, हर टाइम हमें जो है इस वायर को सेम साइज ऑफ वायर लेना है, लेकिन अलग अलग मेटल की वायर लेंगे, साइज उनका सेम रहेगा और चेक करेंगे कि डिफ्लेक्शन जो है एममीटर में कितना हो रहा है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द मेटल्स, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आते हैं, दैट इज द डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी, राइट। All the metals, generally the metals are, they have high density. Okay, generally the metals have high density. Again there is an exception, sodium, potassium, lithium, they have low density. Okay, next is the melting point and
the boiling point, melting and boiling point. Next property, and boiling point. See here, the metals, they generally have high melting and high boiling point. Again, there is an exception, gallium, cesium, they are the metals that have low melting point, और उनका जो melting point है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है. बॉडी का हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर है. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर से भी कम है. इसीलिए हम जब गैलियम को अपने हाथ में रखेंगे तो हमारे पाम में रखने पर गैलियम जो है वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो है एक्सेप्शंस है. ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की वो है सोनोरस. नेक्स्ट इज सोनोरस. ठीक है, metals are sonorous, that is they have the ability to produce, they have the ability to produce sound, they have the ability to produce sound when strike to a hard surface, when strike to a hard surface. That is, metal produce sound when they strike to a hard surface. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? हमारे स्कूल की बेल है ना. सबसे कॉमन एग्जाम सोनोरिटी का हम क्या पढ़ते हैं? हमारे स्कूल की बेल. ये हमारे स्कूल की बेल है. ठीक है, ये हो गया मेटेलिक प्लेट, और यहाँ पर इसे हम किससे स्ट्राइक करेंगे? एक हैमर बनाते हैं. ये हो गया एक हैमर जिससे हम लोग ये बेल को स्ट्राइक करने वाले हैं, है ना. जब इस हैमर से इस बेल को हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? अ लाउड साउंड विल बी प्रोड्यूस, इजंट इट? स्कूल में जब बेल बजती है तो लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड, isn't it? When this metal surface is struck with this hammer, then a loud sound will be produced, and this loud sound will reach every corner of the school, right? This is due to the sonorous property of the metal, that metal can produce sound when struck to a hard surface. ठीक है, ओके. तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल्स की, राइट. नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट विल डिस्कस, इट इज द लस्टर. ठीक है, और शाइन. दिस नॉन मेटल, they do not possess the luster, or they do not have the shiny appearance. But again there is an exception, that is iodine. Iodine is a non-metal but it has a shiny appearance. Okay, so this is the regarding the luster of the shine. Iodine is an exception. Next is hardness. Next property is hardness. ठीक है, non-metals are generally, they are not hard, they are generally soft, they are generally soft and brittle, they are generally soft and brittle. Brittle मतलब इसे आसानी से हम लोग हाथ से तोड़, जैसे हमारा चौक होता है क्लास में जब हम चौक यूज़ करते हैं उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, so that is called as a brittle. So they are not hard, they are soft and brittle. But again there is an exception, except diamond, isn't it? Diamond is an allotropic form of carbon, है ना. Diamond is an allotropic form of carbon, and we know that carbon is a non-metal, isn't it? So diamond is a non-metal which is very hard. Diamond जो है वो metal से भी hard है, and it is the hardest known substance on the earth. तो ये हो गया हमारा exception, diamond. Next आ जाओ, state की बात करते हैं अभी हम. State, ठीक है. तो जहाँ तक स्टेट का सवाल है, जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो है गैशियस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट. ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो है नॉन मेटल्स सॉलिड में आ जाएंगे, जैसे कि कार्बन. सॉलिड में आ गया हमारा कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, फॉस्फोरस हो गया. ये
फॉस्फोरस हो गया, ये जो है हमारे क्या है, नॉन मेटल्स है बट दे आर सॉलिड। गैशियस में आ जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, all these are non-metals that exist in the gaseous state. As far as the liquid state is concerned, there is only one non-metal which exists in the liquid state, and that is bromine. Bromine is a non-metal which exists in the liquid state. Okay, so the state, it exists in solid, liquid and gaseous state, right? Now next property of non-metal is that its malleability. We know that next property अगर हम देखें तो वो उसकी जो है malleability, ductility. Metals, non-metals, they are non-malleable. Non-metals जो है वो non-malleable है. They cannot be beaten into sheets. Then they are non-ductile. डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर नॉन डक्टाइल बिकॉज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसे हम पतली वायर में कन्वर्ट कर सके, वो डक्टिलिटी है। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, उनकी हम लोग पतली वायर जो है नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल्स की, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। See here, the non-metals, they are poor conductor of electricity, but again there is an exception, that is graphite. There is an exception, that is graphite. Graphite is a good conductor of electricity. Graphite is a good conductor of electricity. Being a non-metal, it is a good conductor. Now what is graphite? Graphite is also an allotropic form of carbon. Graphite is also an allotropic form of carbon. Carbon exists in two allotropic form, one is diamond and other one is graphite. अब ये graphite क्या होती है, ये जो पेंसिल की जो हमारी लेड होती है जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल की जो लेड होती है जिससे हम लिखते हैं, ब्लैक कलर की जो लेड है, that is graphite. So it is a good conductor of electricity. Now as far as sonorous property is concerned, तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. एज फार एज डेंसिटी इज कंसर्न, दे हैव लो डेंसिटी. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। जहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, द मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. They have low melting and low boiling point. So this was regarding the physical properties of metals and physical properties of non-metals. Regarding the chemical properties of metals and non-metals, that we'll discuss in our next class. Okay, but I have a few questions for you. You can please take down the question from the board. Okay, now you can see the assignment on the board. Just see here, your first question is, the ability of a metal to be drawn into wire is known as, these are the multiple choice questions, malleability, ductility, sonority or conductivity. Okay, again the second question is a multiple choice question. Which of the following is not a property of non-metal? They are neither malleable nor ductile, they are brittle, then they are sonorous, then they are poor conductor of electricity except graphite. You have to mention which one of the following is not a property of non-metal. Okay, next we can see the third question. Generally metals are solid. Which one of the following metal is found in liquid state at room temperature? Your options are sodium, iron, chromium and mercury. Okay, next question. Generally non-metals are non-lustrous. Which one of the following non-metal is lustrous? Sulfur, oxygen, nitrogen and iodine. Okay, you have to select which one is lustrous non-metal. Then which one of the non-metal is a liquid? Your options are carbon, bromine,
phosphorus and sulfur. Then name a metal which has very low melting point and can melt with the heat of your palm. You have to name the metal with the heat of your palm. You have to name the metal. Okay. So children, that's all we have in today's class, and you just try to answer these questions, and we'll continue in the next class. Thank you.